Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Jaya Krishna Balram, Krishna Balram, Jaya Vrindavan, Jaya Gaurani Gaurani Gaurani, Jaya Gaurani, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gauri Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gauri Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Jagat Guru Shila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna and Pranam, dear devotees. So welcome to our Nityam Bhagavad Sevaya, reading of Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद और भक्तों की कृपा से हम लोग रोज इकट्ठे होके भागवतम पढ़ पा रहे हैं. And okay, so we'll begin and we'll first see our result from the quiz. आज फिर क्विज में एक ट्विस्ट लग रहा था. आज वो सनातन गोस्वामी की चना रघुनाथ दास. It was a little twist. Okay, so we are 17 and out of 17, 12 devotees have played so far. Atul Prabhu 100%, Anupama Mataji 100%, Giraj Das, then Vijay Mataji, wonderful. Okay, then RGD, then Shashank Chaitanya Prabhu, then Pinky Mataji, then Anushi Mataji, then Shyam Prabhu and Ayush. Okay. So जो बाकी के
4-5 डिवोटीज बच गए हैं, प्लीज प्रे क्विज। हाँ, एंड हमारा जो, हाँ वो यही गलत हुआ है क्वेश्चन सबका, कि मोस्ट वैल्यू थिंग विच वाज नेम गिवन टू लॉर्ड, तो इट वाज गिवन बाय सनातन गोस्वामी, एंड सो ऊपर का ठीक करके लास्ट में ट्विस्ट डाल दिया। होली नेम ठीक करके, ओके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर all the devotees who are engaged in making the questions and then posting them. So big thanks to all of them who are engaged in this wonderful seva. So we'll begin our session now. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namah. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोगों ने कल हम लोगों ने एक ही श्लोक कर पाए थे मेरे ख्याल से। कल हम लोग तो हम पढ़ रहे थे किस तरह से कि जो कुंती महारानी बताती हैं कि किस तरह से उनके ऊपर अलग अलग विपदाएं आई, और वो बताती हैं किस तरह से जो कृपा देवकी के ऊपर हुई उससे ज्यादा कृपा कुंती के ऊपर की भगवान ने, क्योंकि उनके पास तो एक ही बार विपदा आई जब उनके और इनके पास जो है कुंती महारानी के पास बार बार विपदाएं आई, और बार बार भगवान ने उनकी मदद की। और तो अपने आप को इस तरह से वो देवकी से ज्यादा भाग्यशाली मानती है। और फिर वो बाद में प्रार्थना करती है कि किस तरह से वो जो विपदाएं हैं वो दोबारा आए, क्योंकि जितनी बार जब विपदाएं आती हैं तो हम आपको प्रार्थना करते हैं, आपका स्मरण होता है, और आपके स्मरण होने का मतलब है कि एक जो बंधा हुआ बद्धजीव है वो जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर चले जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरह से कि जो लोग जो है जन्म ऐश्वर्य श्री इन सब चीजों में लगे रहते हैं वो भगवान को फीलिंगली नहीं अप्रोच कर सकते हैं। और फिर बोला कि फीलिंगली वो अप्रोच कर सकते हैं जो अकिंचन है। अकिंचन मीन्स जो who those don't have any material possessions, or can also say those who don't have any material desires, like this. और बोला कि आप जो इस तरह के जो किंचन भक्त हैं आप उनकी प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद जो है आज जो है हम अगला श्लोक, ये 28वां नंबर श्लोक ले रहे हैं। सो जिसके अंदर अब वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कंटिन्यू है। मन्ये त्वं कलम ईष्णम अनादि निहिनम विबुधुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन मिथा कली। Manye, I consider Tvam, your Lordship, Kalam, the eternal time, Ishanam, the Supreme Lord, Anadi Nidhanam, without beginning and end, Vibhum, all pervading, Samam, equally merciful, Charantam, distributing, Sarvatra, everywhere, Bhutanam, of the living beings, Yat Mitha, by intercourse, Kali, dissension. Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. My Lord, I consider your Lordship to be the eternal time, the Supreme Controller, without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Purport. Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord
who lives in everyone's heart as the super soul, Paramatma. Another name of the Paramatma feature of the Lord is Kal, or eternal time. Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by him. It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion, and therefore he knows everything past, present, and future. And because the Paramatma feature of the Lord Krishna destines all actions and reactions, he is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is a cause of suffering. So एक वो बता रहे हैं कि जितने भी कष्ट आते हैं हमारी जिंदगी में, जो भी कठिनाइयां आती हैं, उसकी जो जिम्मेदार हैं वो हम स्वयं हैं। अब ये हो सकता है कि हमें याद ना रहे कि हमने कब कोई बुरा कार्य किया, क्योंकि वो हो सकता है कि वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। तो उसमें हमें गलती हो सकती है, पर जो परमात्मा है वो गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वो हर एक के हृदय में है और वो सबके हृदय में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ही इज उपदृष्टा अनुमंता। हमने पढ़ा था भगवत गीता में, भगवान बताते हैं परमात्मा फीचर के बारे में। तो जो भगवान है वो साक्षी हैं सबके, तो उसमें कोई गलती का चांस नहीं है। इसलिए कभी भी हमें अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट इज बिकॉज ऑफ माई ओन पास्ट मिस्टेक्स। और वो क्यों करते हैं, वो बता रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि because we misuse our independence. That is the problem. So everything comes from, one can say, everything starts from avidya, from karam, and from karam, the reaction. So इस तरह से जो sequence बनती है, so that sequence, we are ourselves responsible, not somebody else. Somebody else just become an instrument to deliver what we are supposed to get. So इसलिए लिखा है कि the living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is a cause of suffering. तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि किस तरह से कि how much freedom we have, अगर हम सब कर्म से बंधे हैं तो फिर are we like a robot? So ऐसा नहीं है। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि जिस तरह से एक बैल को खूंटी के साथ बांध दिया जाता है, तो वो जितनी लंबी रस्सी है वो उसके आसपास इर्द गिर्द घूम सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, किसी को अटैक कर सकता है, जो भी है वो कर सकता है। सो ही हैज दैट दैट मच इंडिपेंडेंस। जितनी लंबी रस्सी है उस रस्सी के इर्द गिर्द वो कुछ भी कर सकता है। सो इसी तरह से जो लिविंग बीइंग है वो बंधा हुआ है, बट उस बंधे हुए के अंदर भी देयर इज ए माइन्यूट इंडिपेंडेंस। सो मिसयूज ऑफ दैट इंडिपेंडेंस ब्रिंग्स सफरिंग। और भगवान के भक्तों के बारे में आगे प्रभुपाद देखते हैं कि द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट मिसयूज देयर फ्रीडम, देयरफॉर दे आर गुड सन्स ऑफ द लॉर्ड। Others who misuse the freedom are put into miseries destined by the eternal Kal. The Kal offers the conditioned souls both happiness and miseries. It is all predestined by eternal time. As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked for they are all predestined by Kal. So इसीलिए बहुत ज्यादा अत्याचार किसी मटेरियल चीज के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भागवतम में लिखा है, भागवतम के श्लोक में लिखा हुआ है कि जो हमारे हिस्से की जो कष्ट है वो भी आएंगे, और जो खुशियां हैं वो भी मिलेंगी। उनको कोई ले नहीं सकता, उनको कोई छीन नहीं सकता। तो जैसे कष्ट अपने आप आते हैं, वैसे हम देखते हैं सरप्राइजिंगली खुशियां भी अपने आप आती हैं। सो जो हमारे हिस्से में है वो समय जो है वो हमें दे देता है। No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the result of his own destiny. The destiny is made by the living beings in the course of social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature. Thus, everyone creates their own destiny
under the supervision of the Supreme Lord. He is all pervading, and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is also known as eternal time. So one of the एक जो भगवान का feature है is also काल. भगवान बोलते भी कालो अस्मि, I am the काल, like this भगवद गीता में. So feature क्या है कि it is all pervading, and also there is in this material world the time is always running in a cycle. It is never ending, like this. It has no beginning, no end, like this. So this is in this verse, Kunti Maharani, she is comparing Krishna to Kal. So that shows her intelligence and shows her vision. उनका जो spiritual vision है, that she understand the कि जो भगवान है, so वो जानती हैं कृष्ण कौन है. So we come to next verse 29. नावेद कश्चित् भगवान चिकित्साम देवा मानस्य निर्नाम विडंबनम नायस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेषस्याचस्मिन् द्वेषस्याचस्मिन् विषमा मतिर्निर्नाम na does not Veda know Kashchid anyone Bhagavan, O Lord, Chikirsatam pastimes Tav your Iha Manasya like the worldly men Nirnam of the people in general Vidambanam misleading Na never Yasya his Kashchid anyone Daita object of specific favor Asti there is Karhichit anywhere Dvesha object of envy Cha and Yasmin unto him Vishama partiality Mati conception Nirnam of the people. Translation. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. जैसे कई बार दानव बोलते हैं कि जो विष्णु हैं वो पक्षपात करते हैं दानवों और देवताओं के बीच में. So he is partial. Or sometimes people also think Lord is partial. क्योंकि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ पर उसका फल नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फल नहीं मिल रहा है, कोई और नहीं भी कर रहा है तो उसको मिल रहा है, तो इसमें क्या है? Lord is showing partiality. तो जो कुंती महारानी है तो she is saying people only imagine that Krishna is partial, but he doesn't have envy towards anybody nor Lord's favor anybody. तो उसका थोड़ा सा डिटेल हम तात्पर्य में पढ़ते हैं. Purport. Okay. Who has raised the hand? 1 second. Let me see. Yes, Ayush, go ahead. The Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. He has no one as the specific object of hostility. The very conception of the personality of Godhead as a human being is misleading. His pastimes appear to be exactly like a human being's, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees, but in fact he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. But utilizing the sun rays, sometimes even the stones become valuable, whereas a blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. Darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial, disturbing its rays. The sun rays are open to everyone, but the capacities of the receptacles differ. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get special mercy. Factually, the pure devotees who are engaged in the transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. A mercantile house renders service to someone in exchange for values. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange, and therefore the full mercy of the Lord is open for him. Suffering men, needy men,
inquisitive persons or philosophers make temporary connections with the Lord to serve a particular purpose. When the purpose is served, there is no more relation with the Lord. A suffering man, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. But as soon the recovery is over, in most cases the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness. Those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients of the mercy of the Lord, and those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. Such partially in receiving the Lord's mercy is related to the Hare recipient, Krishna. and it is not due to the partially of the all merciful Lord. Hare Krishna. Thank you, Ayush. So, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया वो किसका दिया गया? सूर्य का. हाँ, कि जो भगवान को कंपैरिजन हाँ ये आचार्य करते हैं सूर्य के साथ, कि जिस तरह से हाँ सूर्य जो है वो किसी के लिए पार्शल नहीं है. हाँ, बट जो सूर्य है हाँ वो मनियों के अंदर भी जो है रेस डालता है, जो हाँ तो दे बिकम वैल्यूएबल. और वेयर एज जो अंधे लोग हैं हाँ वो सूर्य को नहीं देख पाते. हाँ, ऑल्दो पूरी तरफ रोशनी है. इसी तरह से जो चोर डाकू हैं हाँ वो डरते हैं सूर्य की रोशनी से, कि सूर्य की रोशनी उनके लिए ठीक नहीं है. हाँ, सो दे आर fearful. Like this. So like this, there are many ways we can see, but we can see this. The जो सूर्य की किरणें हैं, they are not partial to anybody. But according to the capacity of the receptacle, then the interaction is different. इसी का एक और एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है गंगा का, कि जैसे गंगा का जो पानी है वो पवित्र है, पर गंगा के किनारे जो झाड़ियां उगती हैं उसमें कई कांटे वाली भी होती हैं. कई बार कोई नीम का पेड़ या कोई कड़वे वाला पेड़ भी उग जाता है, और वहीं पर सम मैंगो ट्री इज ऑल्सो देयर. सो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द गंगा कि उनके किनारे, कि बोले गंगा इतनी पवित्र है पर इनके किनारे इतनी झाड़ियां हैं, कांटे हैं. सो या ये जो पत्ती हैं नीम की इतनी कड़वी हैं, like this. So all that depends upon the seed. Like this. It is not Ganga's partiality कि उनके कारण कांटे की झाड़ियां उनके तट पे निकल रही हैं. इसी तरह से तो जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी भगवान जो है वो सबके लिए वो जो है वो किसी को फेवर या किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ आई इंटरेक्ट विद द लॉर्ड. और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं यहाँ से कि वो जो 4 तरह के भक्त हैं जो जिनके पास सुकृति भी आने की, आर्तो आरती जिज्ञासु ज्ञानी, जो भगवत गीता में बोलते हैं, कि बोलते हैं कि वो भी जो आते हैं उसमें भी मुश्किल है, क्योंकि जब उनकी वो जो भी जिस भी पर्पस के लिए वो भगवान के पास जाते हैं और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो भगवान को छोड़ देते हैं. बोलते हैं कि दुख में सुमेरन सब करें, सुख में करे न कोय. सुख में सुमेरन जो करे, सुख कष्ट काहे का होय. सो लाइक दिस है ना. सो जब वो, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड नॉट प्योर डिवोटीज. व्हाई? दे हैव सुकृति, सो दे कम टू द गॉड, बट वंस देयर टास्क और देयर अर्थ, जो भी उनका इच्छा है वो पूरी हो जाती है, देन दे बिकम देयर रिलेशनशिप बिकम्स वेरी लैक्स if not completely broken. So ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जो रेसिपिएंट है या जो भी भगवान को अप्रोच कर रहा है वो उनकी चेतनता पे डिपेंड करता है, ना कि भगवान की. भगवान इज रेडी टू गिव कृपा टू एवरीवन लाइक दिस. So इसीलिए वो कह रहे हैं कि those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipient of the mercy of the Lord. जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन से, क्योंकि आचार्य अपने जीवन से सिखाते हैं, सो हम देखते हैं उनके जीवन से कि किस तरह से प्रभुपाद जो है भगवान के ऊपर अपना कार्य करते रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, बिजनेस चलाते रहे. He had, but Lord pushed him towards complete surrender, like that. And once Prabhupada surrendered completely, then we saw what happened, that how much Prabhupada could do.
Like this. So not that he was not a pure devotee in the Grast, it's just that Acharya shows from the life. And और वो हम देखते हैं उसके बाद भी, जितने भी प्रभुपाद के बाद जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, कि देखते हैं कि जिनका कंप्लीट सरेंडर रहा, देन वी सी इन अ पीरियड ऑफ वन लाइफ टाइम ओनली दे आर कंप्लीटली चेंज्ड. व्हाई? बिकॉज दे बिकम recipient for Lord's complete mercy, like this. So इसलिए प्रभुपाद देख रहे हैं, such partiality in receiving Lord's mercy is relative to the recipient and it is not due to the partiality of the all merciful Lord. Like this. Okay. Who has raised the hand? Yes. Ankur Prabhu, go ahead. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. When the Lord descends to this material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partial to his devotees only. But that is not a fact. Despite such apparent manifestation of partiality, his mercy is equally distributed. In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualification, because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from the effects of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. Somehow or other, if someone puts himself open in the sun rays, he is sure to get the requisite benefit both by heat and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial. तो वही प्रभुपाद उसी के आगे कर रहे हैं कि स्पेशली जब भगवान नरलीला करते हैं तो वो और कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि लग रहा है कि फेवर कर रहे हैं, कि कौरवों की जगह पांडवों को फेवर कर रहे हैं. बट क्वेश्चन इज कि जो जितना शरण ले रहा है भगवान, उसको उतनी ही अपनी कृपा बांटते चले जाते हैं. वो ये नहीं कहते हैं कि मैं इसी को फेवर करूंगा, बल्कि वो हर एक किसी को फेवर करते हैं जो भगवान की पूर्ण शरण लेता है. और बता रहे हैं किस तरह से कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जितने भी सैनिक थे जो ऑपोजिट साइड से भी लड़े, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर को जो है शरीर छोड़ा, प्राण छोड़े अपने, तो सबके सब दे ऑल गॉट इनटू ए ट्रांसडेंटल अबोर्ड समवेयर. Those everybody got mukti, for sure. And those who had little, Acharya Dada, who had a little favorable mood towards Krishna, they went to Vaikuntha. And those who didn't had a favorable mood, but they died seeing Krishna, they achieved mukti. So जिसको बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े ऋषि practice करते हैं, so that mukti they got just by living their body, their life in front of Lord. So even those got huge benefit. So like this. Okay, next श्लोक हम पढ़ते हैं. जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य आकृतुर आत्मना तिर्यान निर्शेषु यधासु तद अत्यंत विडंबनम. Yes, go ahead, Prabhu. Janma, birth, karma, activity, cha, and Vishwatman, O soul of the universe, Ajasya, of the unborn, Akartu, of the inactive, Atmana, of the vital energy, Taryak, animal, Nr, human being, Rishishu, in the sages, Yadashu, Su, in the water, Tat, that, Atyant, veritable, Vidambanam, bewildering. Translation. Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work, though you are inactive, and that you take birth, though you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. Purport. The transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. The Lord is the all-prevailing supersoul of all existence, and yet he appears in the form of a boar
amongst the animals in the form of a human being as Ram, Krishna, etc., in the form of Rishi like Narayan, and in the form of an aquatic like a fish. Yet it is said that he is unborn and he has nothing to do. In the Shruti mantra, it is said that the supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to the or greater than him. He has manifold energies, and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength, and activity. All these statements prove without any question that the Lord's activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. And because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. Therefore, no one can calculate him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the supreme Lord, and in all circumstances. सॉरी, इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्तो देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना। कि जो भी व्यक्ति जो मेरा जो जन्म और कर्म जो समझ जाता है कि कि जो भगवान की जो जितने भी जो प्राकट्य है या जो भी भगवान की जो गतिविधियां हैं वो सारी क्या है, वो सारी आध्यात्मिक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त होता है, लाइक दिस। सो तो ये जो है, ये जो तत्व है, ये कुंती महारानी समझती हैं। शी अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा, what is her position, like this, like that. Okay, so we come to the next one. Anybody else want to read can raise their hand. So अब जो है, अब ये अब ये जो है, ये श्लोक है अगला, ये दामोदर लीला अब याद कर रहे हैं कुंती महारानी। The wonderful श्लोक which comes to दामोदर लीला. Yes, आनंद विलासिनी माता जी, go ahead. Text 31. गोपी आदते त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिङ्गना सम्प्रभां माक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयन्ति भीरपि यद्विभेति. Synonyms: Gopi, the cowherd lady; Yashoda, Adate, took up; Twai, on your; Kritagasi, creating disturbance by breaking the butter pot; Dam, rope; Tavat, at that time; Ya, that which; Te, your; Dasha, situation; Ashru, Kalila, over-flooded with tears; Agyana, ointment; Anjana, ointment; Sambhrama, perturbed; Aksham, eyes; Vaktram, face; Niniya, downwards; Bhaya, bhavanaya, by thoughts of fear; Stitasya, of the situation; Sa, that; Mam, may; Vimohyati, bewilders; Bhi api, even fear personified; Yat, whom; Vibheti, is afraid. Translation. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Purport. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of Supreme Lord. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances. As already explained, here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only.
And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotee more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. So this is the Generally, the Lord. difference. One second, Radha. So this is the difference between the stature of Yashoda Mai and Kunti Maharani. Because Kunti Maharani, she understands that Krishna is God, so there is awe and reverence in her bhakti, because she understands who is Krishna. But Yashoda Maya, she doesn't understand that Krishna is God. So she is a Raganuga Bhakta who has only affection and love for Krishna without the tinge of awe and reverence. Like this. So that is what she's glorifying Yashoda, because her position. So she said, from Devaki, my position is higher, but not for saying कि वो जो special gopi hai, she's speaking about Yashoda Maya, that her position is higher because completely tinged with spontaneous devotion, no awe and reverence. Yes, Mataji. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude. But the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, consider the Lord to be less important than himself. The Lord's pastime in the original abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The parents of the Lord, who are all pure devotee, consider him a child only. The Lord accepts the chastisement of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Golok Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the starched batter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie up as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget the situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way. And Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental filial love. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. Thank you, Mataji. So, I mean, इसकी तो टीका को बहुत हम कर सकते हैं, बट हाँ, इसको अगर हम स्वयं घर पे पढ़ेंगे तो हम पा सकते हैं. हाँ, तो हम देख सकते हैं किस तरह से हाँ ये पूरी जो दामोदर लीला है, हाँ, तो दैट इज आल्सो नोन टू कुंती महारानी. हाँ, एंड वी नो कि जब हम कार्तिक के अंदर जो दामोदर अष्टकम गाते हैं,
written by Satyavat Muni in a conversation between Narad and Shaunak Rishi. So that Satyavat Muni's prayer is considered why so high? कि जब हम गाते हैं नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा बियुलुक्लादावमानम परमिष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोपया. So all that when we're singing, what is so great about it? The great about it is that Lord, who's the Supreme Lord, he is doing such pastimes. That he is doing the Rudantam, Muhurnetram, Yugmam Mrijantam. So what is happening? Who's playing all this? It is a Supreme Lord, and they see how much is the good fortune of the Brajbasis that they are able to access such loving relationships with Krishna. And these loving relationships are without any tinge of awe and reverence. Because with awe and reverence, like Prabhupada is writing, कि अगर उनको पता होता यशोदा माई को कि ये स्वयं भगवान है, तो कभी छड़ी लेके उनके पीछे कैसे भाग सकते हैं? Rather she will say sorry. जैसे भगवान ने अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया अर्जुन को, भगवद गीता में हम देते हैं, तो then अर्जुन बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरी गलती, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी. तो इसी immediately that ऐश्वर्य brings the awe and reverence brings a different mood. और जो भगवान के स्पेशली जो वृंदावन के जो भक्त हैं सारे, दे आर आगात्मिक भक्त. सो दे आर, आचार्य बताते हैं कि उनका जो शरीर है वो बना ही कृष्ण प्रेम से हुआ. दे हैव नथिंग बट लव फॉर कृष्णा. सो दैट अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण जो है भगवान है, वो उनके चित्त में डायरेक्टली नहीं है, लाइक दिस. सो दैट इज व्हाई दीज लीलास आर प्लेस्ड हायर, and that is why, like we discussed, and here Prabhupada is also clarifying कि जो यशोदा माई की पोजीशन है, it is higher than Kunti's. तो फर्स्ट कुंती said my position is higher than Devki because मेरी इतनी बार भगवान ने मदद की, उनकी तो एक ही बार की, क्योंकि मेरे पास ज्यादा विपदाएं हैं. But now she is glorifying Mother Yashoda because भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया, बल्कि जन्म से भी ज्यादा कि उनके साथ सारा बचपन किया. और जो जिन अलग अलग रसों को भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, वो सारा का सारा आस्वादन उन्होंने ब्रज के भक्तों के साथ किया. इसीलिए जो ब्रज लीला है, दैट इज सो स्पेशल. सो दिस इज द यूनिकनेस अबाउट Krishna's pastimes. Hare Krishna. So we already are 5-7 minutes above the time. If anybody has a question, we can take. Okay, here Shashank Chaitanya Prabhu is saying, Hare Krishna Prabhu, if Kunti Maharani knew Krishna as Supreme God, then how could she have dealing with Krishna as a nephew? Yes, it is the same thing. कि क्योंकि उनको भगवान के बारे में पता है, और उनको ये भी पता है, जैसे ये बोल रही हैं कि आप नरलीला करते हैं तो इट इज बिविल्डरिंग, बट बिकॉज शी इज अवेयर कि नरलीला कर रही हैं, तो शी डजंट वांट टू ब्रेक इट. ये हमने पढ़ा था जब वो भगवान को बोलती हैं कि भगवान के जो वो कमल वाला जो श्लोक आया था कि भगवान के वो नाभि से जब वो शुरू होती है भगवान की प्रार्थना करना, तो उसमें प्रभुपाद रिवील करते हैं कि किस तरह से कि जो कुंती महारानी है वो चरणों से प्रणाम क्यों नहीं कर रही हैं. वो कहते हैं क्योंकि शी डजंट वांट टू एम्बैरेस लॉर्ड, कि द बुआ है जो है मेरी, वो जो है वो मेरे चरणों में प्रणाम कर रही हैं, पर आती हैं घूम के नाभि, फिर ऊपर फेस, देन शी कम्स टू चरण. सो शी अंडरस्टैंड्स, बट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो भगवान है वो नरलीला कर रहे हैं, शी फैसिलिटेट्स. जैसे नारद है, ही नोज, है ना, कि भगवान है, कौन है भगवान, ही अंडरस्टैंड. बट जब वो आते हैं द्वारका में तो कृष्ण उनके चरण धोते हैं, तो वो धुलवा लेते हैं. आपको सोच सकता है कि जब पता है भगवान है तो उनसे चरण कैसे धुलवा सकते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स नरलीला इज गोइंग एंड दे डोंट वांट टू ब्रेक दैट रसा, like that. So they facilitate Krishna's pastimes like this. So they is that okay? Yes, sir. Thank you. Okay. Hare Krishna. So these are wonderful prayers. Yes, Ankur Prabhu. प्रभु जी, जो फर्स्ट श्लोक था 28 नंबर, उसमें सेकंड लास्ट लाइन एक आई थी, एवरीवन हियर वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर and thus everyone creates his own destiny under the supervision of Supreme Lord. Correct. तो वो मुझे the lord it over the material nature, because हम भोगना चाहते हैं. सो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो भोगना चाहता है यहाँ पर, है ना.
सो वो भोगता है, भोगने का जो प्रयास है वो करता है, हाँ, बट उसका जो एंड रिजल्ट है, जो वो श्लोक था उसमें, it brings suffering because he is not meant for enjoying, he is meant for service. But because हम सेवा को छोड़ के भोगने की मनोवृत्ति रखते हैं, तो भगवान वो भी फैसिलिटेट कराते हैं, he facilitated that also, but then we have to bear the consequence also, like this. ठीक है, हरे कृष्णा. So thank you so very much. And I again pray कि जो भी श्लोक पढ़ते हैं उसको दोबारा पढ़िए, so you will get better understanding and better taste when we read again tomorrow. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Hare Krishna. Hare Krishna.